think you should. Hey guys, this is Chinmay from Makeup Clinic. Welcome back to our technical talk. This is the new topic, but I'm sure that you are very much curious about it. What is that? Because the thing is, what whenever you're going to service the bike, you will be requiring this particular subject, handy. You should know about what to do when you are giving the bike for the service or when you are working on the bike. The subject is basically engine flush. It's a very not a typical topic or what we can say, but the chemical, right? The chemical is more of related to इंजन फ्लश. जो हम लोग इंजन फ्लश ज्यादातर हमें मार्केट में मटेरियल मिलता है, काफी सारे कंपनीज अवेलेबल है जो आपको ये केमिकल देते हैं. पहले के जमाने में कन्वेंशनल टाइप में एंड मिस्टेक, ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूँ. कन्वेंशनल टाइप में एक्चुअली जो पुराना एक स्टाइल था उसमें डीजल और ऑयल मिक्स करके डालते थे. दैट वाज ओके बिकॉज डीजल में जो है वो कुछ डिटर्जेंट्स है जो कार्बन को निकाल सकते हैं. बट केरोसिन एंड पेट्रोल नेवर यूज. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट दे हैव, आई मीन पीपल आर डूइंग. डोंट डू दैट बिकॉज उससे क्या हो जाता है कि फ्यूल से यानी कि केरोसिन या आपका जो पेट्रोल है उसकी वजह से फिल्मिंग जो है, ऑयल का फिल्मिंग जो रहता है, जो स्पेयर पार्ट्स के ऊपर रहता है वो निकल जाता है. सो डोंट यूज दैट. बेरिंग्स आपके प्रॉब्लम दे सकते हैं, आवाज कर सकते हैं. So it's better to use, this engine flush. Engine flush has got it is made only for the flushing, to remove the carbon. It is not made for, it is not going to damage your spare part or something, because earlier people used to use kerosene and petrol. Don't do that because it will damage your spare parts which are there inside the motorcycle engine. And you can, if the chemical is not available, then at the most you can go for diesel and oil plus. That means a mixture of diesel and oil. That you can use because the diesel has got one detergent inside. It's a content basically. So it cleans the carbon content from the inner side. But how many kilometers, after how many kilometers you should go for engine flush? Not every time. I've been seeing around that people are using in and out every after 3000 kilometers. You don't need to use that. See, usage of any particular material, if you are using it all the time, then it is harmful. Don't do that. Every after say 15 to 20,000 kilometers you can use the engine flush, because जो कार्बन कंटेंट है वो हमें चाहिए भी और नहीं भी चाहिए. रीजन, कार्बन कंटेंट इज बेसिकली, कार्बन इज बेसिकली गिव्स अस कुशनिंग इफेक्ट. इट वाइब्रेशन लो करता है और साउंड को भी लो करता है. सो वो कुशनिंग इफेक्ट रहता है, वो चाहिए हमें. बट एक्स्ट्रा अगर कार्बन कंटेंट रहेगा तो दैट विल हार्म योर इंजन. उससे कंप्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सो ये सब चीजें कैसी रहती है कि एवरी टाइम आपको यूज नहीं करना है. सो एवरी आफ्टर 15 और 20,000 किलोमीटर्स यू कैन यूज दिस केमिकल. ज्यादा यूज नहीं करना है. यू कैन यूज दिस केमिकल एवरी आफ्टर 15-20,000 kilometers. No need to use every 3,000 kilometers. That will remove all the carbon from the bike. That is harmful because we require the carbon. Carbon is basically, I mean, if whatever the carbon is there inside the engine, it gives you cushioning effect, sound damping, and it's a completely different effect what you get from. Vibrations will be less. So ये दोनों चीजों को हमको बैलेंस करना है. Don't remove all the time and remove the carbon, but when is the biggest issue, right? So 15-20,000 kilometers is enough for the particular this one. But अगर आप बोलते हैं कि मैं इंजन फ्लश करने के बावजूद भी मेरा इमीडिएटली 3000 किलोमीटर्स में मेरा कार्बन जो है या तो ऑयल जो है बहुत ज्यादा ब्लैक हो गया है, तो रिमेंबर वन थिंग, देयर आर सर्टन स्पेयर पार्ट्स व्हिच आर गोइंग टू मेक द ऑयल डिग्रेड. दैट मींस योर क्लच प्लेट. The friction plate and clutch plate is the biggest issue in the bike, because this bike is basically weight clutch. It has got a weight clutch. So what happens if it burns, then the oil is going to be black at all. So in that case, if you are getting that immediately, I mean after engine flush, if you are getting this oil black immediately, too much of blackness, then definitely there is some other problem. So don't misunderstand, राइट, कि एवरी आफ्टर 3000 किलोमीटर मुझे करना क्यों पड़ रहा है. करना पड़ रहा है इसका मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम हो चुका है. अगर नहीं करना पड़ रहा है तो दैट इज ओके, और नहीं करना ही है आपको, मतलब 15,000 किलोमीटर तक तो आपको वेट करना है. बट आपको 3000 किलोमीटर में आपको ये दिखाई देता है कि बहुत काला ऑयल निकला है, तो यू हैव टू चेक द क्लच प्लेट्स. क्लच प्लेट जाने का सिम्टम भी आपको चेक करना है. जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली कि ब्लैक ऑयल मैंने निकाला हुआ है और क्लच प्लेट गया है, डायरेक्टली मैं ये नहीं बोल सकता हूँ. उसके लिए अलग सिम्टम्स जो है वो गाड़ी दिखा देती है, आपको बताएगी गाड़ी, vehicle is going to tell you whether the clutch plates are burned or not. So don't get confused in that case, right? So whenever you are replacing the engine oil, don't go for engine flush all the time. It can do it, after a few hundred kilometers, few thousand kilometers. Now I'm going to show you how to do this. It's very simple. For this, we'll be requiring one small funnel.
because it's a very small bottle, so I'm just going to use this for the pouring purpose. And I have right now this 19 socket, deep socket. I am keeping this handy because I want to show you the difference. I'm going to first of all remove the stock oil, which is the one which is not mixed up with the flush, and then we can use that. I can show you that oil for the comparison purpose. So right now I'm going to remove some ml from the engine, then I'm going to pour engine flush, and then I'm going to show you and tell you how to do that stepwise. For this, I'm just having 2 teacups. So some amount of oil I have removed from the engine. As you can see, it's very black. What exactly this engine flush does? Basically, it makes the oil very thin. There is a procedure. It is not like just mix up that oil, the engine flush with the oil and just remove it immediately. इसको mix करते समय एक procedure है, वो step है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी. First, जो ऑयल फिलिंग प्लग है उसको निकालो आप. Then, so funnel मैंने रख दिया है, तो I'm going to use this product. This is made for two-wheeler engines. So this is the best company what I have found right now in the market, in Indian market. India में काफी सारे other companies भी है, but I found that this is the best chemical what we are getting from the company. And now I'm going to pour this. So I'm going to pour this whole bottle. आप देख सकते हैं ये जो लिक्विड है ये काफी पतला है, लाइक अ वाटर. सो पूरा वाटर मैंने इसमें डाल दिया है. ये मैंने पुराना ऑयल जो है ये आप देख सकते हैं काफी थिक है, राइट. तो इसको हम साइड में रखते हैं. आई एम गोइंग टू कीप इट असाइड फॉर सम टाइम, सो आई कैन शो यू द कंपैरिजन. remove the funnel, close the filler plug. What to do next? Once you fill up, once you pour this chemical in the engine oil, start the bike and keep the bike idle for 10 minutes at least. Now remember one thing, don't ride the bike because the vehicle will come under very high load and the vehicle become very hot when you are riding the bike. When the bike is on the stand, on the main stand, you have to keep the vehicle at idle condition for 10 minutes. But now the problem is what if you keep the bike on for 10 minutes, the bike will also get heat, no problem. It will get heat. But the problem is what vehicle also require cooling. So you may think that I'll ride the bike, so the engine will get cooled down, and I can use it. I can ride the bike for 10 minutes, so both the things will happen. But remember one thing: we do not know, we are not sure about that the chemical is made for underload, right? It is made for heating. It is made for engine flush. That's okay, but at what temperature? So we do not know because nobody going to tell you all those things on the bottle as well because it is not made for that, right? So we are going to keep the bike on the ramp itself, but what we will do here in this case, we are going to keep one table fan so the engine will get cooled down. It will get some ample air to keep it under optimum temperature. So ये temperature हमें control करने के लिए हमें इसके सामने हम fan रखेंगे. So मेरा गाड़ी ज़्यादा heat up भी नहीं होने वाला है and I can keep the vehicle on for 10 minutes और उसके बाद हम इसको drain करेंगे. तो मैंने table fan on कर दिया है. मेरा गाड़ी
अभी ऑफ है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस इंजन फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू कीप द इंजन 10 मिनट्स ऑन. सो इससे क्या होने वाला है, ऑयल सब जगह सर्कुलेट होगा. सर्कुलेट होने के बाद जहां जहां पे उसको कार्बन, जहां जहां पे ऑयल का उसका फ्लो जाने वाला है, वहां से वो कार्बन उठा के वो बैक टू सम आने वाला है. सो द होल oil is going to come back to main sump once it starts rolling, and once I keep the machine off condition, right? So I'm going to start the bike for 10 minutes. Now let the bike be on in on condition for 10 minutes. इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जब आ जाता है, तब इसका जो कंट्रोलिंग भी हम लोग करने वाले हैं, इसके लिए मैंने फैन लगाया हुआ है. सो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज भी नहीं करना है और रोलिंग भी करना है. मुझे दो काम करने हैं. टेम्परेचर ज्यादा ओवरहीट नहीं होना चाहिए गाड़ी, इसके लिए मैंने फैन लगाया हुआ है, और इसका ऑयल सर्कुलेशन भी होना बहुत जरूरी है. सो दैट विल क्लीन all the sludge or debris or whatever things are there inside the carbon layer and everything. It will come down to, I mean, it will keep on cleaning around and it will come back to the main sump. So I'm going to keep it as it is at idle condition. ये गाड़ियों का जनरली जो आइडलिंग है वो ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1500 तक है, तो वैसे के वैसे ही हम इसको रखेंगे, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ना ही रेव करना है. आई हैव सीन मेनी पीपल रेविंग दैट इंजन ऑल द टाइम, गिविंग लॉट ऑफ रेविंग एक्सेलरेटर एंड ऑल. बाइक आइडल कंडीशन में या आपका स्टैंडिंग कंडीशन में इसको रेव नहीं करना है. दैट इज नॉट एडवाइजेबल. आपका ब्लॉक पिस्टन उड़ सकता है, कार्बन आना चालू हो सकता है, आई मीन ऑयल जो है वो बर्न होना चालू हो सकता है, अनइवन वेयर एंड टेयर हो सकता है. सो अवॉइड ऑल दोस थिंग्स. जस्ट कीप द मशीन ऑन फॉर 10 मिनट्स. नाउ इट्स ऑलमोस्ट से आई जस्ट 2 मिनट्स अभी मैंने चालू रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स मुझे कवर अप करना है. सो आई एम गोइंग टू कीप द मशीन एज इट इज ऑन. सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 10 मिनट्स. मैंने इसमें 10 मिनट कंप्लीट कर चुका हूँ. मेरा इंजन रोलिंग काफी अच्छा हो चुका है. हीट भी मेरा गाड़ी ज्यादा नहीं हुआ है, इसका मतलब रोलिंग भी मुझे मिल गया और गाड़ी हीट अप भी मैंने नहीं किया. मैंने फैन लगाया हुआ था एज यू कैन सी. तो इसको हम लोग पहले इसको स्विच ऑफ करेंगे. नाउ वी डोंट रिक्वायर. आई एम गोइंग टू शो यू द एग्जैक्ट अमाउंट और द क्वालिटी ऑफ दिस engine oil pre and after, that the one which I have already collected aside. So I'm just keep it here. Now I'm going to remove the that oil which is added by the flush, added with the flush. So I'm going to remove this engine oil, and then I'll collect some oil and then I'll show you. In this case, when you are keeping the bike on, keep it in ventilated area, because the exhaust will create a lot of problem since this is inner side. ये जो ऑयल है, oil which I have collected, this is mixed with engine flush, and this is without engine flush. So I'm going to show you the difference. This I can see it's little bit thicker side. ये thick है, काफी thick है oil, right? और ये जो ऑयल है ये काफी थिन हो गया. ये देखिएगा, आप देख सकते हैं बहुत थिन हो गया है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो गया है ऑयल का, इसका इंजन फ्लश का. आप देख सकते हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं. जो फ्लो है ये फास्ट है और ये स्लो है. और एक तरीका है,
ये जो ऑयल है, ये जो ड्रॉप है, ये पुराना ऑयल है, यानी कि विदाउट इंजन फ्लश, और ये विथ इंजन फ्लश है। अगर इसका हम फ्लो देखेंगे तो ये जो फ्लो है बहुत फास्ट है, ये जो है वो बहुत स्लो है। दिस फ्लो इज वेरी स्लो एंड दिस वन इज वेरी फास्ट। रीजन, बिकॉज दिस इज वेरी थिन ऑयल एंड दिस इज वेरी थिक ऑयल। दैट मीन्स engine flush, the chemical which we have added in the engine oil, it's working properly. It's making it thin, as well as it is also removing a lot of carbon deposition which was there inside the engine. So you can check out the flow also. That means my engine oil is becoming thick, from thin, from thickness, after usage of this engine flush, and it is also removing my lot of carbon deposition which is there inside the engine. So this is how you have to change the engine oil when you are using this engine flush. This is the step. ये आप अगर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका इंजन जो क्लीनिंग है वो इनसाइड से अंदर से बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास केमिकल नहीं है तो मैंने पहले भी बोला था कि इसमें आप डीजल और ऑयल मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि डीजल में जो है वो डिटर्जेंट जो है, एक डिटर्जेंट का एक कंटेंट रहता है। इट इज वेरी गुड फॉर रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग द engine spare part. I have seen most of the time, as I'm again telling you that I have seen many people using petrol. इसमें पेट्रोल डालते हैं 1-1 लीटर या 2-2 लीटर और फिर इंजन चालू कर देते हैं, और फिर उसमें से आपको देखिए काला सब कुछ निकला, इसका मतलब सब क्लीन हो गया, ये नहीं होता है। इसकी वजह से आपका जो ऑयल का जो फिल्मिंग था स्पेयर पार्ट के ऊपर वो भी डैमेज हो जाता है। सो डोंट ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ मटेरियल और फ्लूइड विच इज गोइंग टू डैमेज योर इंजन, क्योंकि ये आपको अभी नहीं समझेगा, ये फ्यूचर में आपको बाद में पता चल जाता है कि मेरा इंजन खराब हो गया, लेकिन आपको तब याद नहीं रहता है कि इंजन फ्लश आपने कैसे किया था। सो इंजन फ्लश, whenever you are going for engine flush, you have to use chemicals rather than using any gasoline or any kind of a fluid which is not made for that. Conventional way you can use engine oil and diesel, which has got detergent. The content in the diesel has got one detergent, this one, so that will help you out to remove all the carbon deposition from inside. So this is the way you have to complete the procedure and to remove the engine oil from the engine. Thanks for watching and always stay connected.